Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. It's me Jafar, and today I'm going to introduce you with coordinate geometry of class 9th. It's the third chapter of class 9th, and today I am going to introduce you with this. So before starting our video, first of all let me tell you that you must be interested while watching this. So students, let's start. Coordinate geometry, suppose we can say it's an algebraic expression. It's an algebraic expression which is used to show in a Cartesian plan, or we can say graph. Suppose we have this is a straight line, we can say it's a horizontal line. Let me call this x, and here we can call it as x dash. And this is another vertical line, this line is called vertical, and let me call here it y, और यहाँ पे हम इसको नाम रखेंगे y dash. और ये both lines horizontal line as well as vertical line एक special point पे meet होते हैं. This point is called intersecting point, or we can say it's an origin. So x-axis, this horizontal line is called the x-axis and this vertical line is called the y-axis. So dear student, आपको ये भी पता होना चाहिए कि origin के right side में जो भी ये values आते हैं they are all positives, और origin के left side में जो x dash होता है नेगेटिव होते हैं. ओरिजिन के अपर साइड में जो y होता है ये पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के बिलो साइड में जो y डैश होता है ये नेगेटिव होता है. एंड these both x axis and y axis divide the Cartesian plan into four parts, sorry, not equal, four parts. We can say also equal, these are four equal parts, and with these parts are called, suppose we start these parts from here, this is called the quadrant first, and this is the second part, this is called a quadrant second, and this is our third part, and this is called a quadrant third, and this is the fourth part, and this is called the quadrant fourth. So this is the first quadrant, and this is second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant. So we have four quadrants in this Cartesian plan, and हमें ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें x क्या होते हैं, x के वैल्यूज़ क्या होते हैं और y के वैल्यूज़ क्या होते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दीज वैल्यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू टू टर्म्स. पहले हमें ये दो टर्म्स पता होने चाहिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टू टर्म्स है, आप इसको नोट करके लिखो. पहला टर्म है एबिसिसा. एबिसिसा. दूसरा है ऑर्डिनेट. First one is the abscissa and the second one is ordinate. So what is abscissa and what is ordinate? हमें पता होना चाहिए abscissa किसको कहते हैं और ordinate किसको कहते हैं. जो abscissa होता है ना, these are the values of x, and the ordinate, these are the values of y. Clear? तो हमें ये पता हुआ कि जो abscissa है these are the values of x, and the ordinate means the values of y. Suppose if we have 2, 3, what is 2 and what is 3? हमें ये पता होना चाहिए 2 क्या है और 3 क्या है. 2 is the abscissa, it means it's the value of x, and 3 is the ordinate, it means it's the value of y. दूसरी बात, जो quadrant फर्स्ट में जो x के values होते हैं they are all positive, and quadrant सेकंड में x पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, x का वैल्यू नेगेटिव होता है और y का वैल्यू पॉजिटिव होता है. और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव्स होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ x भी नेगेटिव होता है एंड y भी नेगेटिव होता है. एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी हैव x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. सो इट्स क्लियर. तो हमने ये भी पढ़ा है कि चार क्वाड्रेंट में x के वैल्यूज़ और y के वैल्यूज़ क्या होते हैं. अगेन आई विल टेल यू, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव ऑल x, बोथ x and y पॉजिटिव. इन सेकंड क्वाड्रेंट वी हैव x नेगेटिव and y positive. In third quadrant we have both x and y negatives, and in fourth quadrant we have x positive and y negative. And let me show you these 2 pointers in a graph. How can I represent these? Suppose we have 2, 3. How can we represent it in a Cartesian plan? So suppose let me
suppose ये हो गया 1 2 3 4. These are the values of x, and this is 1 2 3 4. तो हमारे पास यहाँ पे 2 है. 2 हम देखेंगे ओरिजिन से 2 कहाँ पे 2 यहाँ पे आता है, एंड y का वैल्यू है 3. सो इट इज़ हियर. यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे आया हमारा 2,3. सो वी कैन represent many pointers. So this is the point 2,3, and I think it's enough for today. Thank you. Have a nice day.